So, hello everyone, let's get start with the class 10 science 1, that is the chapter number 10, which is the last chapter of the class 10 science 1. So, that is the space mission. So, the topics which we are going to see here. So, the topics which we are going to see, that is the space missions, artificial satellites, classification of artificial satellites, orbits of the artificial satellites, satellite launch vehicles, and space missions away from the Earth. Artificial satellites classification. So, let's see. So, first of all, there is the can you recall section which is given here. So, first question is what is the difference between the space and the sky? Second is what are the different objects in the solar system? Third is the what is meant by a satellite. Fourth is how many natural satellites does the Earth have? So the questions to all these questions as what is the difference between the space and the sky? Then what are the different objects in the solar system? What is meant by the satellite? And how many natural satellite does the Earth have? So all these questions you can answer in the live chat regarding with this, or else you can comment regarding this to this video. So, man has always been curious about the unknown places and he has always been eager to expand of his knowledge by exploring the unknown world. He must have had deep curiosity about the space and how many twinkling stars in the dark sky. He must have had dreams to fly to the space and must have been working for that. सो अगर हम यहाँ पर बात करें सो मैन जो है वो ऑलवेज वो क्यूरियस होता है कि अननोन प्लेसेस को विजिट करना सो उसका जो नॉलेज है वो उस स्पेस से रिलेटेड उस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड जहाँ पर वो पहले कभी गया नहीं है सो फॉर द अननोन प्लेसेस इट इज क्यूरियस रिगार्डिंग विद दैट एंड ऑल्सो इट इज क्यूरियस अबाउट एक्सप्लेनिंग एक्सप्लोरिंग टू द अननोन वर्ल्ड सो उसकी जो डीप क्यूरियोसिटी है कि ये स्पेस क्या है हाउ इट दिस स्पेस इज फॉर्म स्टार्स ट्विंकल क्यों होते हैं डार्क स्काई में सो ही हैड अ ड्रीम टू फ्लाई टू द स्पेस आल्सो एंड मस्ट हैव बीन वर्किंग फॉर दैट. So next is the space missions. So substantial developments in the technology, spatially space technology in the latter half of the 20th century resulted in the development of the spacecrafts, making space voyage possible. Since then, more than 1,000 artificial satellites have been placed into the orbits around the Earth. Additionally, space missions have been undertaken for the close observation of the various objects in our solar system. We will learn about all this in this chapter. सो जो कि सब्सटेंशियल डेवलपमेंट जो कि टेक्नोलॉजी में हुई उसकी वजह से जो स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई सो वो इजी हो गई सो इन द लैटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेस क्राफ्ट मेकिंग द स्पेस वोएज दैट इज द पॉसिबल और लैटर हाफ जो कि 20th सेंचुरी के हाफ पीरियड में सो ये पॉसिबल हो गया कि स्पेस क्राफ्ट की मदद से हम पॉसिबल स्पेस में जा सके. So, since that, more than the 1,000 artificial satellites have been placed into the orbits around the Earth. और 1,000 से भी ज्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो ऑर्बिट्स के जो अर्थ के ऑर्बिट्स है उसमें प्लेस्ड की गई है. एडिशनली स्पेस मिशंस हैव बीन अंडरटेकन फॉर द क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन अवर सोलर सिस्टम. और अलग अलग जो कि स्पेस मिशन है वो कैरिड किए गए टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स एंड टू गेट know about the information regarding with that objects through the close observation in the solar system. So we will all learn about this in this chapter. So ये सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So we can classify the space missions into the two categories. In one type of the mission, the objective is to put the artificial satellites in the orbits around the Earth for research and various other useful applications. So एक टाइप का जो स्पेस मिशन था सो उसमें जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स थी वो हम ऑर्बिट में प्लेस कर रहे थे ड्यू फॉर द यूजफुल एप्लीकेशंस ऑफ दैट. The objective of the second type of the mission is to send the spacecrafts to the outer space for the close observations and understanding of the objects in the solar system or even outside the solar system. So, जो कि सेकंड टाइप का जो स्पेस मिशन था सो उसका मोटो क्या था व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि उसका ऑब्जेक्टिव था कि स्पेस क्राफ्ट्स को आउटर स्पेस में भेज के
जो क्लोज ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड है, जो कि सोलर सिस्टम में अलग अलग जो फेनोमेनन हम स्टडी कर सके क्लोजली टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम इवन आउटसाइड द सोलर सिस्टम। सो डू यू नो करके यहाँ पर एक पैराग्राफ हमें यहाँ पर दिया है। सो क्या है वो देखते हैं। सो द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इन द स्पेसक्राफ्ट वाज यूरी गैगरिन of the USSR. He orbited the Earth in the 1961 और उसने क्या किया, जो अर्थ की ऑर्बिट है उसको चक्कर लगाया 1961 में। The first person to step on the moon 1969 was the Neil Armstrong of the USA. Then Rakesh Sharma of the India orbited the Earth in the 1984 in the Russian spacecraft. So Kalpana Chawla and Sunita Williams of the Indian origin also participated in the space explorations through missions organized by the NASA. So that is NASA is National Aeronautics and Space Administration of the USA. सो सबसे पहले जो स्पेस में गया गया था जो कि स्पेस क्राफ्ट में, सो इट वाज द यूरी गैगरिन विच वाज ऑफ द यूएसएसआर। Then he orbited to the Earth in the 1961. The first person जो मून पे गया that was the in the 1969 was the Neil Armstrong of the USA. Then Rakesh Sharma of the India orbited the Earth in 1984 in a Russian spacecraft. Then Kalpana Chawla and Sunita Williams of Indian origin has participated in the space exploration, which was the mission organized by the NASA. So next is the can you recall which types of the telescopes are orbiting around the Earth? Why it is necessary to put them into the space? So जो कि अलग अलग टेलीस्कोप्स रहते हैं, जैसे कि हबल टेलीस्कोप हो गया, कैसिग्रेन टेलीस्कोप हो गया, जिसके बारे में हमने क्लास 9th में स्टडी किया ही है। सो नेक्स्ट क्या है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू पुट देम इनटू द स्पेस? सो स्पेस में पुट करने का एक जो मेन रीजन है, दैट इज फॉर द क्लोज ऑब्जर्वेशन of the different astronomical objects placed in the solar system. So can you tell where does the signal in your cell phone come from? Where from does it come to the mobile towers? Where does the signal to your TV set come from? You may have seen photographs showing the position of the monsoon clouds over the country in the newspaper. How are these images obtained? So need and importance of the space mission. The world has become a global village due to the space mission. Today, we can contact a person in any part of the world within the second. We can gather information about the worldwide events sitting at the home. You all know the importance of the internet. So, due to the internet, every information is available at our fingertips. It has become possible to get the advance alert about the natural calamities and take proper precautions. सो जैसे कि आज के अगर हम स्टडी करें, सो आज के इसमें जो इंटरनेट की वजह से, सो जो सारी इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड वाइड, सो दैट हैज कम टू अवर फिंगर टिप्स। सो ड्यू टू विच वी कैन गैदर द इंफॉर्मेशन present at any part of the world on our phone just by the single click. So during the war, it is possible to get the information about the actions of the enemy through aerial surveillance using the satellites. और वॉर के सिचुएशन में भी ये पॉसिबल था कि जो कि एनिमीज का जो डेटा था, वो एक्शंस उनके, वो एरियल सर्वेलेंस से हम सैटेलाइट्स की मदद से हमें पता चल रहे थे। So it is also possible to explore the fossil reserves and the minerals in the earth. So thus there are the unlimited applications of the space missions. Today, space technology is an inevitable part of the development of a nation. So space technology जो है, that is the inevitable part of the development of a nation. That means it is an important part of the development of a nation. Next is the artificial satellite. A natural satellite is an astronomical object orbiting the Earth or any other planet. So, natural satellite, which of the Earth, that is the Moon, which revolves around the Earth, it acts as a natural satellite. So, natural satellite is an astronomical object orbiting the Earth or any other planet. The Moon is the only natural satellite of the Earth. Some other planets in the solar system have more than one natural satellites. Similarly, if a man-made object revolves around the Earth or any other planet in a fixed orbit, it is called as an artificial satellite. So artificial satellite क्या है कि जो man-made object है जो revolve करता है Earth के around or any other planet, then that type of the satellite is called as the artificial satellite. सो सबसे पहली जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वो
Sputnik थी was sent to space by the Soviet Union in the year 1957. So सबसे पहली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि सोवियत यूनियन ने 1957 में जो स्पेस में भेजी थी उसका नाम था स्पुतनिक. So again, this is one of the complete the following or the important question which can be asked in the exam. So today, more than the thousand satellites are orbiting the Earth. The satellites work on the solar energy. So solar photovoltaic panels are attached on both the sides of the satellites like the wings. Instruments are installed in the satellites to receive and transmit the signals from and to the Earth. So अलग अलग जो भी instruments होते हैं receivers हो गया transmitter हो गया so that are all fitted on the satellites to receive the signals from the Earth and also to send the signals. So the satellites have the various other types of the instruments depending on their functions. One such a satellite is shown in the figure 10.1. So signals transmitted from the Earth to the satellite and from the satellite to the mobile tower and mobile phone are also shown. These satellites are sent into the space to perform various functions. So depending on their functions, satellites are classified into the following categories. सो सैटेलाइट्स के जो अलग अलग जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज किए जाते हैं उसके हिसाब से उसके अलग अलग कुछ फंक्शंस होते हैं सो सच टाइप ऑफ वन ऑफ द सैटेलाइट यहाँ पर आप इमेज जो कि 10.1 में यहाँ पर जो डायग्राम दिया है दैट द टावर्स विच आर कनेक्टेड टू दिस सैटेलाइट एंड सेंड्स द सिग्नल बैक. So this helps in the communication that the signals are sent to the satellite through the transmitter and the receiver gets the signal back. So this is the main. Then these satellites are sent into the space to perform the various functions. Depending on their functions, satellites are classified into the following categories. So क्या है अलग अलग categories? सो वो देखने से पहले यहाँ पर कुछ जो फुल फॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं दैट इज इनसैट. इनसैट क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट. जीसैट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. आईआरएनएसएस दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. आईआरएस दैट इज द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. GSLV that is the geosynchronous satellite launch vehicle and PSLV that is the polar satellite launch vehicle. So there are the various different types of the satellite which we can see in this chart. So type of the satellite, function of the satellite, the names of the Indian satellite series and their launch vehicles are given here. So सबसे पहली जो है वो है वेदर सैटेलाइट. सो स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ द वेदर. इसके लिए वेदर सैटेलाइट का यूज किया जाता है. उसमें जो लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट की सीरीज आती है दैट इज द इनसैट एंड जीसैट एंड द लॉन्चर इज यूज एज द GSLV दैट इज द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. Next is the communication satellite. So establish the communication between different location in the world through use of the specific waves. So इसमें भी INSAT and GSAT और जो launcher use किया जाता है that is the GSLV. Next is the broadcast satellite which is used for the telecasting of the television programs. That is the INSAT and GSAT launcher GSLV. Next is navigational satellite. Fix the location of any place on the Earth's surface in terms of its very precise latitude and longitude. यहाँ पर जो इन सैटेलाइट जो यहाँ पर आती है सीरीज दैट इज IRNSS and the launcher uses PSLV. Next is the military satellite. Collect information for the security aspects. Earth observation, study of the forests, deserts, oceans, polar ice on the Earth's surface, exploration and management of the natural resources, observation and guidance in case of the natural calamities like the flood and the earthquake. So ये जो यहाँ पर सब ऑब्जर्व करने के लिए जो सैटेलाइट यूज की जाती है दैट इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. और जो सीरीज है दैट इज द IRS दैट इज द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि हमने यहाँ पर देखी थी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दैट इज द IRS एंड लॉन्चर इज यूज्ड एज द PSLV. सो अगेन यहाँ पर कुछ इंटरनेट इज माय फ्रेंड करके वॉच एंड शेयर. सो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स भी यहाँ पर दी गई है. सो ऑन क्लिकिंग टू दिस लिंक ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व द and watch the videos related with this satellites and all that for the additional information which you can get. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द ऑर्बिट्स ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के जो लॉन्च करने के लिए अलग अलग जो ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है जो सेट की जाती है सो उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. So all artificial satellites do not revolve in the similar orbits around the Earth.
सो सारी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है वो सिमिलर वे में जो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करती। द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सो द फंक्शनिंग ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द कि कितने हाइट पर वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ सरफेस से लॉन्च की गई है। The nature of the orbit, circular, elliptical, and whether the orbit shall be parallel to equator or making some angle with it. So, so यहाँ पर जो सैटेलाइट लॉन्च करने की जाती है, so that should be the orbit shall be parallel to the equator or making some an angle with the circular orbit. So to put the satellite into its proper orbit at the specific height above the Earth's surface, the satellite is taken to the height using a satellite launcher. Then the satellite is given a specific velocity known as the critical velocity in a tangential direction to the orbit. So जो कि हमने जैसा कि चैप्टर वन जो कि ग्रेविटेशन में हमने स्टडी किया था कि सपोज one of the stone is tied to the string and when we are revolving मतलब moving in the circular force motion that we are acting as the centripetal force towards us but the centrifugal force is directed towards the outwards and this is in the tangential form. So that particular force acting is in the tangential format. Wait 1 minute. So the orbits of the artificial satellite, all the artificial satellites do not revolve in the similar orbits around the Earth. So वहां पर हमने देखा कि critical velocity plays an important role, जिसकी वजह से वो वहां पर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो सेट हो जाती है. So uh, so it in the tangential direction to the orbit, the satellite then starts revolving around the Earth. The formula for the velocity vc can be derived as below. I think- So the formula for that particular can be derived as if a satellite of the mass m is revolving around the Earth in an orbit of the height h with the speed vc, then as seen in the chapter on the gravitation, a centripetal force mvc square upon r will act on it. Here, r is the orbital radius of the satellite from the center of the Earth. So the formula that can be derived as so it will be the mvc square upon r.
where m is the mass of that particular satellite, then r is the radius, h is the height. So here r is the optical radius of the satellite from the center of the earth, as shown in the figure 10.3, that r is the capital R is the radius of the earth. This r is the orbital radius of the satellite from the center of the earth. यहाँ पर आप देख सकते हैं that is this is the VC, which is the critical velocity and at the height h from the surface of the earth satellite orbit. सो एट मतलब जो पर्टिकुलर हाइट पे लेके उसको एक टेंजेंशियल वेलोसिटी दी जाती है, ड्यू टू विच इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड दैट इन पर्टिकुलर दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. So this centripetal force is provided by the gravity of the earth. Therefore centripetal force is equals to gravitational force between the earth and the satellite. और जो ये centripetal force जो provide किया जाता है, that is by the gravity of the earth. Therefore centripetal force जो है that is equals to satellite. So that is mvc square upon r plus h is equals to gmm upon r plus h whole square. So as centripetal force हम लिखते हैं mv square upon r, लेकिन यहाँ पर जो r जो है, so that we are considering as it is the radius of the earth plus the height, so it will be the r plus h, so which is equals to gmm upon r plus h whole square. सो यहाँ पर जो वी स्क्वेयर वी सी स्क्वेयर जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला या जी एम अपॉन आर प्लस एच, दैट इज सो हियर वी आर हैविंग दैट अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वैल्यू इज वी आर नोइंग दैट इज 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. M is the mass of the earth, which is 6 into 10 raised to 24 kg. R is the radius of the earth, that is 6.4 into 10 raised to 6 meter, which is equals to 6400 kilometer. H is the height of the satellite above the earth's surface. R plus h is equals to radius of the orbit of the satellite. So it can be seen that the critical velocity does not depend on the mass of the satellite. As the height of the satellite's orbit from the earth's surface increases, critical velocity decreases. So जैसा कि यहाँ पर जो critical velocity का जो फॉर्मूला है, जो कि यहाँ पर यहाँ पर जो कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट. सो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, सो क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट. एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस, जैसे ही हाइट बढ़ती जाएगी सो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी. So depending on the heights of the satellite's orbit around the above the Earth's surface, the satellite orbits are classified as below. और depending on the height, so orbit अलग-अलग जो है वो classify किए गए हैं, जिसके बारे में हम नीचे यहाँ पर देखेंगे. Still now, अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे रिलेटेड विद द कंटेंट जो कि अब तक हमने इस चैप्टर में देखा, so you can